And a fire at the Madhya Pradesh Secretariat, and politics rages over this fire. The Congress protests outside the Secretariat over the handling. In Greater Noida, students fall ill at a student hostel due to the food there. Many of them are hospitalized but out of danger now. The parents say the college did not inform them. And the Prime Minister, on a mega northeast outreach, unveils a strategic Arunachal tunnel, the world's longest bi-lane tunnel in Arunachal. Earlier he was in Assam. Our top story now in news from Noida, where several students living in Greater Noida in a hostel there were rushed to hospital after complaining of food poisoning. Students allege that they fell unwell after eating food served at their hostel last night. Students are fortunately now out of danger but have been kept under observation. Food safety officials also visited the hostel earlier and took food samples to probe. Meanwhile, few parents said the college did not inform them about their children getting hospitalized. We are present here in one of the hospitals where the children are admitted here. I'll go across to one of the patients here. पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश यादव है। क्या हुआ था कल? कैसे आप बीमार पड़े? आपको तो महाशिवरात्रि का व्रत रखा हम लोगों ने सबने, तो हम रात को वही फलार खाने का था, तो उस पर उन्होंने साबूदाने का खीर मिलता है और तो हमने खाया। उसका 1 घंटे बाद सभी को अचानक बॉडी में शिफ्टिंग होना स्टार्ट हुआ, चक्कर आने लग गया और उल्टी हो रहा था। उसकी वजह से बहुत तबीयत ख़राब हो गया, फिर एडमिट कराया यहाँ पे। उसके बाद अब थोड़ा आराम है, लेकिन अभी भी बॉडी शिवरिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। और फूड पॉइजनिंग बता रहे हैं, कुछ डाल दिया उनमें, कुछ हो गया शायद। आपका नाम क्या है? सक्षम स्वर्णव। आप अभी आर्यन रेसिडेंसी के ही? यस। क्या हुआ था कल? कैसे आप बीमार पड़े? कल क्या हुआ था, रात वो फलाहार था, वो शिवरात्रि मैंने करा था, तो उसी का मैंने फल खाया, तो उसमें उन्होंने पानी फल की पूड़ी बनाई थी और आलू की सब्जी और साबूदाने की खीर, तो उसी खाने से हुई है। लगभग 11 बजे मुझे बहुत तेज़ चक्कर आने लगा, फिर मैं थोड़ा मतलब खुद को कंट्रोल किया, पानी वगैरह पिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, तो मैं हॉस्पिटल आ गया और अभी शिवरिंग हो रही है मुझ में। हाँ, हम यहाँ पे सीधे आए। हमें बच्चे की एक दोस्त है उसने फ़ोन किया था कि आकाश को फूड पॉइजनिंग हुआ है, रात 2:30-3 बजे से वो यहाँ पे एडमिट है। कॉलेज की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई भी कॉल हमें नहीं किया गया कि बच्चा क्या है क्या नहीं। सिर्फ हमें बच्चों के दोस्तों ने कॉल किया, तब हम सीधा हॉस्पिटल गए। All right, let's go across to Ishika now for more. Ishika, first tell us about this hostel and what have the authorities there said? Well, Gargi, certainly it is a very shocking news that is now coming from Greater Noida. In fact, we are reporting exactly from outside the hostel, where this entire incident transpired last night. This is the hostel where a lot of students started falling sick, and they say, that happened after they consumed the food that was prepared for Mahashivratri. In fact, the parents also, go on to say that despite their children falling sick, and that too, in such a large number being admitted to the hospital, even then, no kind of communication was done from the hostel authorities. There are, students here, who say, in fact, the hygiene issue was there previously as well with the hostel, but there was no response that were given to these students when they questioned the hostel authorities. In fact, if we talk about the authorities here, that is the district magistrate, he says, that certainly the cognizance of this incident has been taken. Directions have been given to, in fact, the food safety officials here who had, in fact, come here for the sampling. Now, that sample, they will take it for analyzing, and once the report comes, it will, it will be clear as to how many students had fallen sick, and also what was that, had caused such a lot of number of students to fall sick at once. But let me also tell you that the district magistrate had also given now directions to start checking of all the hostels and mess so that such kind of incident, does not repeat here. Over to you. All right, Ishika, thanks so much for joining us with those details. One can imagine many concerned parents there.
All right, some good news now coming from Dharamshala, and India has won the Dharamshala test, beating England by an inning and 64 runs. And with this, India wins the series 4-1. Let's go across to Osama for more. And Osama, take us through the highlights. Well, it has been an incredible series, Gargi, for India. And remember, this is a second string team for India, especially when it comes to the batting side. You didn't have the likes of Virat Kohli playing in the series. You didn't have KL Rahul. You didn't really have the core batting that India normally has when it goes into a test series. And young players, Yashasvi Jaiswal, Sarfaraz Khan, in this particular match, Padikkal, everyone, they stood up and said that, look, this is our time and this is when we are going to take charge and beat England, and especially beating England when they are playing their own brand of ultra-aggressive cricket, which they call baseball, and to beat them at their game. When you take the example of Yashasvi Jaiswal, he counter-attacked England in the first couple of matches, scoring double hundreds, scoring hundreds, then Shubman Gill scoring his centuries. And in this particular match, Shubman Gill and Rohit Sharma started by scoring those centuries, setting the platform for India really in this particular test match. And then when it comes to the bowling, Ravi Ashwin, you have to talk about Ravi Ashwin, 38-year-old off spinner, taking more than 500 wickets, taking his 36th fifth wicket haul. It is an incredible achievement as far as Ravi Ashwin goes. And when you look at India's record when it comes to the test series, India has not lost 17 test series, consecutive 17th test series win at home, and the last time they lost to England was in 2012, and they had learned their lesson and made sure that after going one down in the test series, they made sure that they did everything right and came out victorious. And now 4-1, that's the result, that's the score when it comes to the test series, and India have comfortably beaten baseball and they have won the test series 4-1. And all eyes will now be on the Indian team when they go into the T20 World Cup, which starts in just a couple of months from now. All right. Thanks so much, Osama, for taking us through the highlights. And great news they're coming as India has won that match. Well, news now on the Bengaluru blast, and the NIA is once again seeking a public help in finding the suspect who was responsible for the blast in the Rameshwaram Cafe. 1 week on, the main suspect has still not been caught, and NIA's second appeal to the public, they have offered a 10 lakh cash reward for any help, for any tips. Now, the explosion, remember, took place at the popular eatery on the 1st of March, which resulted in 10 people sustaining injuries. The assailant, concealed behind a mask and cap, had strategically positioned the bag at the cafe, believed to contain an IED, improvised explosive device. Now, in the latest video released by the NIA, the suspect is seen in a grey shirt, also in a mask, and the timestamp indicates that it was recorded on the same day as the blast. So there you can see when he entered the cafe, and a further video released shows the suspect leaving later. Well, earlier we spoke to Pratibha for more details. In fact, the NIA is probing all angles. Number one, starting with examining every CCTV footage at every nook and corner of the state to find out which direction would he have possibly gone after planting the bag at Rameshwaram Cafe. In fact, the initial leads led the NIA to from Bengaluru to Ballari, and after that they lost track of which direction the suspect would have gone. But right now, all angles seem to point to the IED bearing resemblance to the Bengaluru blast that happened in 2022. So all those terror suspects who are lodged at Bengaluru prison are also being taken into custody by the NIA to interrogate them and find out whether there are any possible links between the two. Some of the handlers who were arrested in the previous cases are also being interrogated at the same time. This is what we learned from sources from the NIA team. And all of these angles are set apart on one side, and on the other they are also seeking the help of the citizens to find out the identity of the suspect, because if you take a close look at all the CCTV grabs that have emerged on media, all of them point to him wearing a mask as well as a cap. Though there are some of the CCTV grabs that are without the cap, but still the mask seems to be one of the biggest hurdles in terms of identifying the suspect, and that is why आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है
ये The Narcotics Control Bureau has arrested Jaffer Sadik, a former DMK functionary, arrested over international drug cartel links. Jaffer Sadik, the kingpin in the India-Australia-New Zealand drug trafficking network, is now being investigated. एवेंटा नाम की कंपनी के गोडाउन से सीज की। सूडोएफेड्रिन मैं बताना चाहूँगा मेथएम्फेटामिन नाम के एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग को बनाने में काम आती है। 15 तारीख को हुए सीजर के बाद एक सघन ऑपरेशन एनसीबी ऑपरेशन ब्रांच, एनसीबी की अन्य इकाइयां और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छेड़ रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोगों ने ये सफलता प्राप्त की है। ये गैंग का काम मुख्यतः सूडोएफेड्रिन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर भेजना था और ये छुपाने के लिए उसमें कवर के रूप में डेसिकेटेड कोकोनट या फूड प्रोडक्ट्स रखते थे। पिछली पूछताछ और आज इस सरगने ने भी ये कबूला है कि इन लोगों ने लगभग 40-45 कंसाइनमेंट यहां से भेजे हैं और पिछले 3 सालों में लगभग 3,500 किलो सूडोएफेड्रिन भारत से ये लोग भेजने में कामयाब हुए हैं। इसने यह भी माना कि इसने काफ़ी बड़ी मात्रा में इससे ड्रग मनी अर्जित की है और उसको तमाम सारे बिजनेस जैसे फिल्म प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी वगैरह में इसने लगाया है। इसके फाइनेंशियल लिंकेजेस और ड्रग मनी के ट्रेल की जांच सघन रूप से की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूडोएफेड्रिन एक प्रीकर्सर केमिकल है जो कि मेथएम्फेटामिन के प्रोडक्शन में काम आता है और ये एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस के रूप में इंडिया में विधिक आधार पर रखा गया है इसको, और इसको जो भी डाइवर्ट करता है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। सर, जफर सादिक का क्या प्रोफाइल है? जफर सादिक अब्दुल रहमान इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। इसने स्वीकारा है कि ये डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके पार्टी से ताल्लुक रखता था। ये 15 तारीख के सीजर के बाद हाइडिंग में चला गया, छुप गया और त्रिवेंद्रम, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद होते हुए जयपुर पहुंचा। इसको लोकेट करने के बाद पूछताछ में इसको शामिल किया गया और आज एनसीबी ने इसको गिरफ्तार किया है। इसने ये माना कि लगभग इसने 45 पार्सल यहां से ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं और प्रति किलो के हिसाब से इसको लगभग 1 लाख रुपए इसमें कट मिलता था। लगभग 3,000 से 3,500 किलो ड्रग ये लोग निर्यात कर चुके हैं और इससे इसको करोड़ों रुपए की आमदनी हुई है, जिसका बड़ा हिस्सा इसने फिल्म प्रोडक्शन में लगाया है। एक फिल्म, तमिल फिल्म मंगई नाम की फिल्म का प्रोडक्शन पूरी ही ड्रग मनी से हुआ है। ड्रग मनी को इसने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया है। ड्रग मनी का इस्तेमाल जिन धंधों में हुआ है उनमें पार्टनर्स काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी हस्तियां हैं जो तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से भी संबंध रखती हैं। इसके लिंकेजेस और ड्रग मनी का ट्रेल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम इस ड्रग मनी को कहां कहां इस्तेमाल किया है उसका पर्दाफाश करने और ड्रग मनी को जब्त करने में कामयाब होगी। इसने चेन्नई में ड्रग मनी का इस्तेमाल करके एक होटल भी बनाया है। 2019 में भी इसका नाम एक सिमिलर केस में मुंबई कस्टम्स में आया था, जहां पे ये कीटामिन नाम का एक सिंथेटिक ड्रग मलेशिया भेज रहा था। अब तक की हुई इन्वेस्टिगेशन के आधार पे इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। आगे की जांच में जैसी भी स्थिति होगी वो हम आपको समय समय पर बतलाते रहेंगे। जिस ड्रग की बात हो रही है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत क्या है?
इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ड्रग की अवेलेबिलिटी, डिमांड, सप्लाई पे भी निर्भर करती है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लगभग 1.5 लाख रुपए किलो इस ड्रग की कीमत होती है। मेथएम्फेटामिन, सॉरी, 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो इसकी कीमत होती है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। सर फिल्म इंडस्ट्री के और भी नाम सामने आए हैं? फिल्म इंडस्ट्री के और भी नाम कुछ सामने आए हैं? फिल्म इंडस्ट्री से और भी नाम सामने आए हैं, वो जांच का विषय है। अभी मैं उनका खुलासा नहीं कर सकता, पर हम इसमें सघन जांच करें। आपका प्रश्न क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करता था बिकॉज ही वाज यूजिंग दिस ड्रग मनी फॉर फिल्म मेकिंग एंड ऑल? अभी तक की पूछताछ में फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और कुछ पॉलिटिकल फंडिंग का भी मामला सामने आया है। अभी बस तमिल फिल्म इंडस्ट्री का नाम आया है या मलयालम या कर्नाटका का भी नाम आया है? अभी सिर्फ तमिल इंडस्ट्री प्रारंभिक पूछताछ में सब मामला सामने आया है। सर जिस तरीके से I'm sure you're increasingly familiar with this term, Global Capability Centers or GCCs. The RBI State of the Economy report highlighted the fact that India was rapidly emerging as a global leader in hosting global capability centers. Global Capability Center is an extended office of a company in a location that is typically rich in talent. Close to about 1,600 GCCs in India today, employing about 1.5 million professionals, and these represent a wide sector of industries. They've removed the notion of outsourcing because you're now insourcing. These are your own employees. When we talk about Make in India, there's no bigger Make in India story than what's happening within GCCs. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate.